Hello. So, as you can see, the war memorial in my background, and this place is really just full of monuments, and apparently there's a lot of history about Korean wars and the history of different invasions that happened on Korea at different times. Don't exactly know what these different things on the floor signify, but they probably have some meaning that I don't understand. And then there is some art here. So obviously you need some time to understand the significance and the meaning of it. But अंदर से ये ऐसा है. And let's take a look at it from outside. और अभी हम लोग वॉक करेंगे. सो गाइस, एक बात जो आई वाज सेइंग अर्लियर इज़ दैट इफ़ एंड व्हेन यू आर इन साउथ कोरिया, आई हाईली रिकमेंड कि आप टी मनी कार्ड लें. एंड जब आप बस में से बाहर निकल रहे होते हैं तो यू कैन स्वाइप आउट, यू कैन बेसिकली टैप योर कार्ड अगेन ऑन द कार्ड रीडर और आपको क्रेडिट मिलता है. मीनिंग कि अगर आप बस ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको 2 दफ़ा चार्ज नहीं होगा, एज़ लॉन्ग एज़ आप विदिन 30 मिनट्स अपनी अगली बस पे बैठ जाएंगे. तो ये काफ़ी एडवांटेज है. और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त फ्रंट साइड कोरियन वॉर मेमोरियल की. और मतलब क्या बात है यार, इट्स जस्ट द वे दे हैव बिल्ट इट अप, इट्स सुपर्ब. There are just so many things outside. And एक और बड़ी ज़बरदस्त बात जो मैंने नोटिस की है, that it's absolutely for free. It's free. Like there's no admission fee. So it makes sense. I mean, they want everybody to know their history and what went on in different periods of time. But ये आप चेक करें कितना खूबसूरत इन्होंने ये बनाया है. यू कैन सी सबसे फ्रंट लाइन पे सोल्जर्स हैं, दरमियान में देयर इज दिस वुंडेड फेलो, एंड देन सबसे पीछे जो है उनकी आवाम है जो कि सपोर्ट में पीछे खड़ी हुई है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सेम थिंग हियर. ये सोल्जर्स आगे हैं. And then what seems like helpless people on the back side of this monument. So guys, let's keep moving on. There is some information given here.
So guys, this seems to be like a US Air Force plane, B-52 bomber. As you can see, this B-52 was a long-range subsonic jet powered strategic fighter bomb developed by Boeing in 1955. But yes, seems like they were all retired in 2013, just about 10 years back. और ये छोटू सा T-103 ट्रेनर रशियन. As you can see, it also has lights on its wing. It's pretty incredible. ये जो है Russian made plane है, but it seems like it was obviously owned by Republic of Korea. Incredible. That you can come so close to these and just put these planes out. Don't really know if this paint is original or if it was repainted. But ऐसा लगता है ये अंदर से. Look at the span of the wing of this B-52. This thing is just huge. I mean, cannot fathom कि जब ये बॉम्बर हवा में उड़ता होगा तो must look like a freaking giant. And then this one right here is North American T-28A Trojan trainer, and this is US single engined military trainer aircraft designed to replace the T-6 trainer. Very interesting. ये छोटा सा ट्रेनर जेट है और ये इसके सामने टर्बो फैन इंजन है, इसका फैन लगा हुआ है. आई थिंक दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड. ट्रेनर. वाह यार, very pretty. और ये we are, you know, they're all like standing right next to each other. This is like the rear side of that B-52. Let me give you guys a full view of how these planes are stacked together. But इसके पहिए देखें आप कितने बड़े हैं. नीचे से भी देख सकते हैं आप. क्या इंजीनियरिंग की है. भी early 20th century में. Isn't this incredible? वो एक अलग बात है कि
Oh, the wheel even turns. That's crazy. You can turn this. It's just crazy. You can turn this wheel. This is huge. T-33A shooting star trainer. ये सबके सब ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं. इसका first flight ली थी 1948 में. And then it modified to a combat aircraft, retained machine guns, bombs, and denominated as AT-33. And then बाद में इसको status change करके maybe perhaps with slight modification was turned into a combat aircraft. 1948 में probably no पुराना जहाज है. Second World War के टाइम का Republic of Korea Air Force ROW CAF. और ये उसी B-52 बॉम्बर का राइट वाला विंग आपको नज़र आ रहा है. अनइमेजिनेबल साइज़ है इसका, बहुत बड़ा. और यू कैन सी इसके फ्रंट साइड पे 4 व्हील्स हैं, रियर साइड पे 4 व्हील्स हैं. एंड देन एक व्हील जो है वो इसके विंग्स पे है. I'm assuming कि सारा जो मेनली लोड है वो तो मिडल पे होगा. फ्यूल टैंक्स में बी ऑन द विंग्स, बट साइडों पे खाली एक व्हील है. और ये भी seems like a small trainer aircraft. Don't exactly know. T-37C US jet trainer. इसको ही बाद में लाइट अटैक एयरक्राफ्ट बना दिया गया था. एंड यही वाला देखिए आप, बहुत प्यारा है, छोटा सा. इसका कॉकपिट मैं आपको दिखाता हूँ. देख सकते हैं ऐसा कॉकपिट अंदर से. अभी तक ओरिजिनल इक्विपमेंट लगी हुई है अंदर. This is going to be hard to see because the windows are sort of cracked, so you can't really see inside. ये वाला आप चेक करें. T-41B Mescalero was a single-engine 4-seated aircraft was produced by the Cessna Aircraft Company. The primary training aircraft for US Air Force since 1964. So guys, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे. छोटा सा है ये. And I think it's probably repainted because I can see the paint to be pretty like shiny and glittery. और ये चेन भी पूरी इसकी पेंटेड लग रही है. T-1054. और अंदर से अलबत्ता seems like के real equipment है. और you can see there's not a whole lot of meters inside and lot of measuring equipment. So काफ़ी basic है ये जहाज़. First or second generation of aircrafts. और जगह मतलब पीछे भी बैठने की there's not a whole lot of room in the back. Maybe, you know, one person could barely fit. I mean, 2 people would definitely have a hard time fitting, but it's being classified as a 4-person aircraft. So ये
उसके बाद दोबारा एक प्रोपेलर जेट हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, और उन्होंने सीढ़ियाँ लगाई हैं। मतलब ये खुलता है नहीं खुलता, बंद है ये, बट लेट्स गो एंड रीड अबाउट दिस वन। ये कौन सा है? बट आई रियली लाइक दैट they have given the information about each of these artifacts, each of these like displayed item here. C-46 commando transport, so ये transport aircraft है, और Curtiss-Wright Aircraft Company 1955 में ये इंट्रोड्यूस हुए थे, और वियतनाम वॉर में देवर यूजर लॉट। बट आप चेक करें यार इसको, ब्यूटीफुल, जस्ट एक्सट्रीमली गॉर्जियस एयरक्राफ्ट। And don't exactly know which one is this, but we'll find out. C-119 flying boxcar transport. So ये कोरियन वॉर में यूज़ हुआ था. It was developed by US Air Force or deployed by US Air Force, I'm sorry. और 1974 में रिटायर हुआ है ये. Box car, flying box car. As you can see, it's very boxy. Maybe that's why it got its name, flying box car. It's definitely very boxy. Let me show you its shape from the back side. I mean, looks like a box. Oh, that's very interesting how I haven't ever seen an aircraft like this, but perhaps it generates some lift from this rear part as well. It's a very cool design. Interesting. That is just so interesting, the way it's built. And look at it from the back side. It literally looks like a box, hence the name, flying boxcar. It's incredible. So guys, now we come to this one, and this video is going to be a very long one, I can imagine already. And it's going to be an editing nightmare because I'm going to have a very hard time deciding which ones to keep in my video and which ones to cut out. But ये मुझे बैकग्राउंड में बहुत बड़ा जहाज नज़र आ रहा है. इसकी टेल चेक करें आप, से जाके ये ऊपर. यार मतलब obviously हर चीज़ की पीछे प्रॉपर इंजीनियरिंग हुई है at that time, whatever they knew, and you know, back then computers were not that much powerful or very rudimentary. A&2 cold utility, Soviet single engine biplane, originally produced from transport and agriculture in the late 1940s. इसके बारे में यह है कि इसका लो अल्टीट्यूड पे फ्लाई करता था, और इसका जो टेक ऑफ है वो बहुत ही शॉर्ट हुआ करता था. टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाज super short, and I find its wing structure to be super interesting. As you can see, it's got two wings on each side. And I'm assuming this is also to generate a higher lift
और इनके दरमियान में इतनी जगह है कि जो यहाँ से हवा जा रही हो, एयर, वो मतलब नीचे वाले विंग से डिस्टर्ब ना हो, बिकॉज द प्लेन नीड्स अ स्मूथ फ्लो. ऑब्वियसली नॉट एन एरोडायनामिक्स इंजीनियर, बट और दरमियान में ये चीज़ लगी हुई है, दिस मेटल सपोर्ट, ताकि इसको प्रॉपर सपोर्ट मिले विंग को, इसका स्ट्रक्चर जो है वो रीइंफोर्स हो जाए. Don't really know about this one. Let me show you its cockpit. And it's locked from outside, but you can see the cockpit of it at least. And then this again seems like a transport aircraft, but C-123J was a modified transport aircraft. Maximum speed 445 kilometers per hour, cruising speed 278 kilometers per hour. Range is 5,278 kilometers. So it's got two engines, one engine on each side, and I think कि ये सारे के सारे जो जहाज़ हैं ये C-130 के maybe predecessors हों, but I would not be surprised if that's the case. And it also has a very boxy shape. It's got a huge fuselage, very boxy, and it from inside it does look like a predecessor of C-130. But yeah, they're all painted. Like I can see fresh paint jobs done on them. It would be really cool if you could see them in their original. Obviously, in order to preserve the metal, I guess they have to put on the paint ताकि ये रस्टी ना हो जाए. बट ये वाला आप चेक करें, इसका जो रियर एंड है, वाओ, ये तो मूव भी कर रहा है. Oh my god, look at this one. It's a two-seater, and इसके बारे में थोड़ा रीड करते हैं. Ho is the first Korean aircraft designed and manufactured by the Republic of Korean Armed Forces after the Korean War. क्या बात है, बुखवाल हो. बुखवाल हो. इंटरेस्टिंग. सो ये कोरिया का पहला सेल्फ डिज़ाइंड एयरक्राफ्ट है, और वेरी इंटरेस्टिंग यार. इसके नीचे जो जिस तरह की इसकी शेप है, बड़ा एजी सा, बॉक्सी सा. और पीछे से आप चेक करें इसको, कैसे इसके पीछे भी दो पहिए हैं और आगे भी दो पहिए हैं. So that's very interesting. And I can see a lot of people here just checking out this war memorial today. 저쪽에 가볼래? 나 요거 한 번만 사. MiG-19. तो ये तो रशियन होगा. MiG-19 is Soviet Union's first supersonic fighter.
1953 में बना है ये। So, ये है सोवियत यूनियन का सबसे पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट। Crazy. And you can see its wingtip, I mean the nose tip. इस वक्त ऊपर की तरफ है, but I'm sure ये भी retracted है। But सोवियत यूनियन एक टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर थी, अभी भी सबसे बड़ी कंट्री है in terms of its land mass, but I mean back then in that bipolar world it was a big deal, and that's their first ever supersonic jet. Imagine जब यहाँ से जेट फ्यूम्स बाहर निकल रहे होंगे और ये हवा में उड़ता होगा जहाज़, कितना मैग्निफिसेंट लगता होगा। Looks so slim and sleek and 이건 미국. beautiful. 미국 전투기. 배 타러 가자니까. और before I go there, I wanna 미군이랑 우리랑 미국 Check on this one. 제트기랑 우리랑 하늘에서 훈련하는 모습 실제로. It was the fighter interceptor which carried 2.75-inch rockets. तो ये फाइटर इंटरसेप्टर है और नीचे आप इसके चेक करें, जो चीज़ बनी हुई है, वंडर इफ इट्स लाइक सम काइंड ऑफ अ गन और रॉकेट लॉन्चर। इट सेज 2.7-inch रॉकेट, सो मे बी यहाँ से निकलते हो, बिकॉज दिस डज सीम लाइक 2.7-inch rocket would fit in here. Space is just full of warplanes. ये वाला चेक करते हैं, F4C. And then there's some helicopters over there. So guys, what I'm gonna do is I'm gonna basically read about the history of some of these aircrafts in more detail, और फिर मैं आप लोगों को बाद में helicopters और tanks वगैरह दिखाता हूँ।